Hello students, good afternoon all. So in the last lecture we seen the revision about the transmission medium. Okay, so from that one point is remaining, that is the infrared transmission. Infrared waves are those between 50 and 400 gigahertz. So in the electromagnetic spectrum, their wavelengths are shorter than microwaves but longer than a visible light. Infrared propagation is line of sight. Okay, so these are the infrared transmission which are in the frequencies of 300 to 400 terahertz and electromagnetic spectrum. They cannot penetrate walls, and sun's infrared rays interfere with these rays. So cannot be used for long range communication. As we see in the satellite, we have to use for the long distance, but in infrared transmission they have not penetrate the walls and the sun's infrared rays. So we cannot use for a long range communication. As their usage is confined within closed space, they do not need any government permission for their एप्लीकेशन. ओके, ये हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पे इंफ्रा ट्रांसमिशन यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट के परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इन कम्युनिकेशन? हाउ कैन वी यूज़ द इंफ्रारेड वेव्स इन कम्युनिकेशन? सो द फर्स्ट रेडियोज एंड अदर होम एप्लीकेशंस. ओके, जो हमारे घर में रिमोट्स होते हैं, टेलीविजन के होते हैं, देन एसी के होते हैं, तो उनमें एक लाइट्स होती है, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स होते हैं. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द इंफ्रारेड वेव्स टू यूज इन द कम्युनिकेशन. देन वायरलेस लैंड्स, वायरलेस मोडेम्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स एक्सेट्रा, फायर डिटेक्टर्स, नाइट विजन सिस्टम, intrusion detection system, motion detector. So these are some examples of infrared waves in communication. Now the next is light transmission. Electromagnetic waves within the frequency range of 400 terahertz to 790 terahertz are detected by the human eyes. Light transmission in a line of sight propagation and is blocked by the obstacles. So this is the light transmission which is in this frequency and it can be detected by the human eye. Now there are some types of this. In that, the first is laser signal. Optical signaling can be obtained by laser signal. जो optical signals होते हैं वो laser signal से obtain होते हैं. For example, the lands in two buildings can be connected by installing laser signaling system on the rooftop. Okay, अगर आपको दो बिल्डिंग्स में लैंड कनेक्शन इंस्टॉल करना है, then you have to the building and have to connect this building by using the LAN system. Laser rays are unidirectional, so both the transmitter and the receiver need perfectly aligned photo emitter and photo detector. लेज़र रे जो होते हैं वो यूनिडिरेक्शनल होते हैं. ओके, सो जो ट्रांसमीटर होता है एंड जो रिसीवर होता है, मीन्स जो इंफॉर्मेशन सेंड करने वाला है, ट्रांसमिट करने वाला है, और जो इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला है, दे आर परफेक्टली अलाइंड फोटो इमीटर एंड फोटो डिटेक्टर. Then the next is visual light communication. A more used variant of light transmission is a visual light communication, that is VLC. VLC refers to data communication using visible spectrums of the light. It is a part of optical wireless communication. Visual light communication is a part of visual optical wireless communication, which refers to data communication using infrared, visible and ultraviolet rays. Okay, so these are some examples of the light transmission के लाइट कौन से मीडियम्स हम यूज़ कर सकते हैं. तो एक है लेज़र सिग्नल्स हम यूज़ कर सकते हैं, देन विजुअल लाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं. Then the some applications of this communication using light signals is safe for eyes and cost effective. Also it does not require any license for usage. जो लाइट सिग्नल्स होते हैं वो सेफ होते हैं हमारे आइज़ के लिए एंड कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं. सो देयर इज़ नो एनी लाइसेंस for usage from the government. So it is increasingly being used for ubiquitous computing and IoT system. Okay, तो ये बहुत ही सिस्टम में लाइट ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है. सो वी हैव टू सी इन द ट्रांसमिशन मीडियम में जो हमारा पॉइंट रहेगा था इंफ्रारेड एंड लाइट ट्रांसमिशन. Okay, so the next point is networking cables. Okay, and we have to see how we connect the
cable networking by using these different cables. So we already seen that the different types of cable. And that the first is coaxial cable. This is the picture of coaxial cable. Then unshielded twisted pair, which is twisted. The two wires are twisted and joined with each other. Then fiber optic cable. So these are some types of cable. Then UTP characteristics. Unshielded twisted pairs of insulated conductors ओके हमने ये देखा था कि अनशील्डेड में ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक तो वो अनशील्डेड होता है, ट्विस्टेड होता है और ओके जो उसमें एक सिग्नल पास होता है या जो करंट पास होता है उसके लिए वो कवर्ड होता है इंसुलेटिंग शीट से। ओके सो ये हमने